Hello students, this video is for grade LKG. So let us start. In this sheet, we are going to study 3 different parts in which we will get to know about 3 different subjects. English, Maths and EVS. So let's start with our first subject of the sheet, English. Join the dots and color the picture. Write the letter of the middle sound of the picture in the box given below. What we have to do is, we have to join the dots. Okay, picture बनी हुई है but complete नहीं है, इसमें dots दिए हुए हैं. Dots हमें join करना है and how we will do it? We will do it letter wise ना. A, B, C, D, E, F, G, H. Okay, like this we will join all the dots. और dot join करने के बाद हमें जो भी पिक्चर मिलेगा उसका मिडल लेटर हमें यहाँ पे बॉक्स में राइट करना है. Let's start joining so that we can get the middle letter, no? Wait. Okay, it is a nut. ओके मैंने बहुत अच्छे से ज्वाइन नहीं किया है बट इट इज़ अ नट. NUT नट. तो NUT नट का मिडिल लेटर क्या है? U. तो बॉक्स में हम क्या राइट करेंगे? वी विल राइट U. ओके, सो in this way we have to join all the dots and write the middle letter of the picture. Let's revise A to Z with words. A for apple. B for ball. C for cat. D for dog. E for elephant. F for fish. G for grapes. H for hen. I for ice cream. J for joker. K for kite. L for lion. M for monkey. N for nose. O for owl. P for parrot. Q for queen. R for rabbit. S for sun. T for tiger. U for umbrella. V for van. W for watch. X for Xmas tree. Y for yacht. And Z for zebra. So this was all about English portion. Now let's move to the next section of the sheet. EVS. Record a video saying the name of modes of transports given below and send it to us. सिंपल है. What you have to do is you have to record a video. एक वीडियो रिकॉर्ड करना है जिसमें आप इन व्हीकल्स के, इन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के नेम बताएंगे. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेल which means it is
देन यू विल टेल विच मोड इट इज. पहले बताएंगे कौन सा मीन्स है, मतलब लैंड ट्रांसपोर्ट है, एयर ट्रांसपोर्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट है, रेल ट्रांसपोर्ट है, ये बताएंगे. उसके बाद बताएंगे इसका नाम क्या है. शीप है, एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, बस है, याट है, साइकिल है, कार है, हॉट एयर बलून है, जो भी है ट्रांसपोर्ट का नेम वो आप बताएंगे. ओके, सो व्हाट यू विल डू इज यू विल कीप योर फोन इन फ्रंट ऑफ यू. सेल्फी कैमरा ओपन करेंगे, उसको स्टार्ट करेंगे और पिक्चर को दिखाते हुए क्या करेंगे, पहले मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बताएंगे, फिर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बताएंगे. मीन्स मतलब वो कहाँ, मतलब कहाँ चलता है, पानी में, हवा में, जमीन पे, रेल्स पे कहाँ चलता है, ये बताएंगे. फिर उसका नाम बताएंगे. अंडरस्टूड? लाइक वी आर हैविंग 4 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. मेनली 3 हैं. रेल ट्रांसपोर्ट हमारा लैंड ट्रांसपोर्ट में ही आता है, बट स्टिल वी लर्न अबाउट 4 ट्रांसपोर्ट्स. एयर ट्रांसपोर्ट, water transport, land transport and rail transport. As I have told you, रेल ट्रांसपोर्ट लैंड ट्रांसपोर्ट में ही आता है. क्यों? क्योंकि रेल्स कहाँ होती हैं, ज़मीन पे ही होती हैं. ओके, रेल्स मतलब क्या होता है, पटरी जिस पर ट्रेन चलती है. तो वो किस पे होती है, ज़मीन पे ही तो होती है. तो ऑब्वियसली इफ वी सी इट इज ऑल्सो अ लैंड ट्रांसपोर्ट, पार्ट ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट. ओके, so we are having different means of transport, we are having different modes of transport. अब ज़रूरी तो नहीं है कि हर व्हीकल आपका हर जगह पॉसिबल है. कार आपकी जैसे ज़मीन पे चलती है वैसे पानी में तो नहीं चल सकती. जिस तरीके से आपकी ट्रक ज़मीन पे चलती है उस तरीके से हवा में उड़ तो नहीं सकती. So for different means we are having different modes of transport. Now let's move to the last section of the sheet, which is maths. Identify the number and write the number name. नंबर पहचानना है और नंबर नेम राइट करना है. 1 से 6 तक नंबर दिया है, 1 2 3 4 5 6. We have to write the number name. For this, let's revise number name from 1 to 10. Now speak with me. O N E 1, T W O 2, T H R E 3, F O U R 4, F I V E 5, S I X 6, S E V E N 7, E I G H T 8, N I N E 9, T E N 10. So we have read number names from 1 to 10. Let's revise number name from 11 to 20. अभी 1 से 10 तक पढ़ा, अब 11 से 20 तक रीड करेंगे. E L E V E N 11, T W E L V
E 12 T H I R T double E N 13 F O U R T double E N 14 F I F T double E N 15 S I X T double E N 16 S E V E N T double E N 17 E I G H T double E N 18 N I N E T double E N 19 T W E N T Y 20. So we have read number names from 11 to 20. I hope you all have understood this sheet very well. If you are having any kind of doubt related to any question, any subject or any section, you can ask me. Thank you.